स्टोर करना चाहते हैं अपने डेटा, इट शुड नॉट डेलिबरेटली चेंज इन बिटवीन ड्यूरिंग द प्रोग्राम। जैसे कि वी डिस्कस कि हम कीज आर वेरी स्पेशल थिंग्स इन डिक्शनरी। तो कीज के लिए हम टपल्स प्रेफर करेंगे बिकॉज इन एनी केस टपल विल नॉट चेंज थ्रू आउट योर प्रोग्राम। तो इन ऑर्डर टू प्रिकॉशनरी यूज सच थिंग, वहां यूज करिएगा जहां आपको लगे कि द डेटा हैज टू बी वेरी सिक्योर्ड एंड नॉट टू बी रिटन अप अगेन। So they are created using parentheses. That is a different thing as compared to list. List में आप वो create करने के लिए square bracket लेते थे, यहाँ you're using round bracket जिन्हें हम parentheses भी बोलते हैं। So this is what we have discussed in last class, that they can be heterogeneous, they can be different data types, integer, string, float, char, कुछ भी हो सकता है, but they are immutable. Immutable means they cannot change themselves, and that's the reason why they are faster than list. क्योंकि जो चीज change नहीं हो सकती है, that means they are going to work in a faster mode as compared to the list. तो जहां आपको स्पीड भी बहुत मैटर करती है, तो प्रेफरेबली आप लिस्ट की जगह टपल यूज करेगा। अदरवाइज बोथ द थिंग्स are good enough to be used when you are requiring a data to be used which does not have any importance कि वो change हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right? So tuple are immutable elements. We started with this creation of tuple also in the last class. Tuple is created by placing all the elements inside the parenthesis separated by comma. So this is, say this was the empty tuple that one can create. You name the variable जो आप अपने tuple को नाम देना चाहते हो, my underscore tuple or tuple one, tuple two, whatever you want to give the name as. ठीक है, so it is up to you what the variable of your tuple has to be. Then put a round bracket like this. Just putting a round bracket like this with no element would create an empty tuple. So if you are going to print my tuple, you will get an empty bracket like this. This presence of bracket will be 100% giving you surety that this is a tuple. So if you are having an integer based tuple, you can write 1 2 3 comma करके like this, and you will be having, अगर आप print कराते हो my tuple, you will have the answer like this. So when you were printing your list in the previous case, you were having square bracket coming out as the output. But when you are using tuple and printing it back on screen, you will have round bracket. Your tuple can be of mixed data type. It can be integer, it can be a string, it can be a float. This is what we discussed here in the list also. List was also mixed data type. It can be mixed data type. Now it is up to you. You want to use it in a mixed form or you want to use in a specific one kind of data form. Like whether you want your list to be whole integers, whole string, or whole characters, or whole float numbers. That's up to your choice. Now जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती थी, ऐसे ही टपल के अंदर टपल भी हो सकता है. तो यू कैन हैव a nested tuple also being created. Now in order to create a nested tuple, all you need to do is you need to have a surety that you will put the braces properly. ठीक है, तो अगर ये टपल है, इसमें माउस एक स्ट्रिंग नाम का डेटा है, there is a list inside your tuple 841 846 like this. You have to put a square bracket. There is a tuple within this tuple, and in order to have that tuple, you need to have a round bracket like this and the ending round bracket. So make sure when you're using nesting tuple, you're making clarity with respect to the brackets. And if you want to print this similar kind of output, you will have the string, list, as well as tuple exactly coming at the output. Last, which is shown in the on the slide, is list. Tuple can be created without parentheses also, but precautionary we use parentheses just to differentiate between list and tuple. So you can write directly like this also, 3 comma 4.6 comma dog in the quotes like this, and print it. And but the moment you will print it, the output would be there in the round brackets like this. So आप bracket लगाएं या नहीं लगाएं, compiler would automatically give the tuple output as a round bracket. So have a habit of precautionary having a round bracket placed at the moment of creation also. So creating a tuple with one element is a bit tricky. Nobody wants to create usually one bracket, one element की जो tuple होती है, आप create कर दीजिए, चाहे उसे bracket लगा के करिए, चाहे वो बिना bracket लगा के करिए. Now the point is ये अगर मैं बिना ब्रैकेट लगाते करती हूँ तो दिस कैन बी फॉर्म्ड एज अ स्ट्रिंग ऑल्सो. अगर मैं ब्रैकेट लगा के कर देती हूँ तो इट गिव्स अ श्योरिटी दैट इट इज अ टपल. तो यूजुअली जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, नॉट मोर देन वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होता है, तो आप उसे स्पेसिफिकली ब्रैकेट में लिखिए. ठीक है, पुट इट ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट गिव्स एन इंडिकेशन दैट it is a tuple. But then when you're having one particular element, having one element within parenthesis is not enough. We need a trailing comma to indicate that it is a fact, it's a tuple. तो आप यहाँ पर hello ऐसे ना लिखकर hello के बाद एक comma लगा दीजिए
और ये कॉमा ही अपने आप में इंडिकेशन दे देगा इट इज अ टपल, इट इज नॉट अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो दोनों को केस में डिफरेंशिएट करने में, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग और टपल के केस में डिफरेंशिएट करने में ये कॉमा की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। डोंट पुट अ डेटा नेक्स्ट टू इट, कॉमा के बाद कोई डेटा नहीं है तो दैट इंडिकेट्स दैट्स द एंड ऑफ द टपल, but then when you are using a tuple, you are trying to differentiate it from a string, then please put a comma here. So parenthesis is also optional as such I told you, but then in case of not to have any confusion with respect to string, just put a comma like that. But जब compiler इसको print करेगा तो वो आपको print करके bracket में ही hello देगा, ठीक है। Now here in this case it has not printed the tuple outside, इट हैज प्रिंट टाइप। जैसे ये टाइप एक कीवर्ड है बेटा, टाइप और अगर ब्रैकेट में वेरिएबल लिखते हैं तो टाइप बता देता है कि वो किस डेटा टाइप का एलिमेंट है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर माई अंडरस्कोर टपल नाम का एक एलिमेंट दे रही हूँ, वेरिएबल दे रही हूँ और मैंने ब्रैकेट में हेलो लिखा है विद नो कॉमा हियर, तो ये इसे स्ट्रिंग ले लेगा। तो जब इसकी टाइप आप प्रिंट करना चाहोगे तो यहाँ आप क्या कर रहे हो बेटा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्रिंट टाइप माई टपल, टाइप और ब्रैकेट माई टपल, टाइप माई टपल विल बी गोइंग टू गिव यू what is the data type of this variable my tuple, जो कंपाइलर ने अज्यूम किया है या लिया है एज पर योर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ आप देखिए कॉमा नहीं है तो इसे स्ट्रिंग लिख कर दे रहा है, str class is coming out as string, but then अगर मैं यही चीज हेलो और ब्रैकेट से पहले कॉमा लगा देती तो इसे ये क्लास टपल दे रहा है। So for the compiler to make sure that the data you are giving is a tuple, please put a comma here if you are having single element. This is the story of single element. जब मल्टीपल एलिमेंट्स है तो ऑटोमेटिकली कॉमा आ ही जाएगा एंड द कंफ्यूजन विल नॉट बी देयर। ब्रैकेट भी अगर आप नहीं लगाते हो तो भी आपका कॉमा अगर है तो भी वो उसको क्लास टपल ही देगा, बिकॉज इट अंडरस्टैंड्स विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमा दैट दिस इज अ टपल नॉट अ स्ट्रिंग। ना एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ टपल, जैसे अपने लिस्ट में एक्सेस करने की कोशिश करी थी एलिमेंट्स को, एक एक एलिमेंट को हम इंडेक्स की वजह से लिस्ट करते थे, एक्सेस करते थे, same kind of thing can flow here also. We can use index and again positive or negative index both can work. You can access the values in tuple with the index, just as you did in the list. Nested tuple are accessed using nested indexing. Now, last class में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ nested tupling और nested indexing के बारे में भी, एक इंडेक्स के अंदर दूसरा इंडेक्स। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दोबारा दिखा दूंगी आपको। नेगेटिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू टपल सिमिलरली टू द लिस्ट, जैसे आपने स्ट्रिंग में नेगेटिव इंडेक्स किया था, लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्स किया था, यहाँ पर भी आप नेगेटिव इंडेक्स चला सकते हैं। We can access the range of elements or items in a tuple by using a slicing operator. तो जैसे slicing operator आपने strings में किया था, list में किया था, वही चीज आप tuple में भी कर सकते हैं। Trying to reassign a value in tuple causes an error. Can anybody give me the reason why? Anybody open up your mic. Trying to reassign a value in tuple causes a type error. Because it is immutable. बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। तो अगर किसी आप इम्यूटेबल चीज को आप चेंज करना चाहोगे, उसको रीअसाइन करोगे वैल्यू, तो इट विल गिव एन एरर। जो लिस्ट नहीं दे रहा था बिकॉज लिस्ट वर नॉट इम्यूटेबल, लिस्ट वर म्यूटेबल एलिमेंट्स, राइट। चलिए, so let's take few examples which are there on the screen. Let's say this is a marks. Marks is a variable. It's a tuple variable, and you have written brackets here like this: 23, 45, 32. आप इनको एक्सेस करना चाहते हो तो मार्क्स का 0th पोजीशन एक्सेस करना चाहते हो तो you can write print marks 0, print marks 2 like this. So this is a normal accessing that you have understood as of now. Now nested tuple, अगर tuple के अंदर भी कोई tuple है या tuple के अंदर भी list है तो मुझे nesting करनी पड़ेगी indexing की, उसको एक particular एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए विद इन दी टपल एंड टपल के अंदर टपल या टपल के अंदर लिस्ट को एक्सेस करने के लिए मुझे नॉर्मल इंडेक्सिंग से काम नहीं चलेगा, इंडेक्स विद द इंडेक्स चलेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेस्टेड इंडेक्सिंग। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ सिकंदर यहाँ पर ये एक्सेस करना है तो आई विल राइट एन टपल ब्रैकेट 0। अगर मुझे पूरी लिस्ट एक्सेस करनी है, ये वाली 846 पूरी लिस्ट बोल रही हूँ बेटा, ठीक है, तो आई विल राइट एन टपल 1। तो आप देखिए एन टपल 1 पे 0 पे सिकंदर और एन टपल 1 पे 846 प्रिंट हो गया। नाउ फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 प्रिंट करना है, तो हाउ विल आई रीड दिस 4 या एक्सेस दिस 4? एनीबडी ओपन अप योर माइक एंड से इफ आई वांट टू एक्सेस दिस 4। Ma'am, in square brackets, we'll write 1, 1. 1 1 वेरी गुड, एन टपल 1 1 यानी पूरा इसमें, और फिर इसके अंदर भी 1 करूंगी अगर मैं, तो दैट मीन दिस इज द 0th एलिमेंट, दिस इज 1th एलिमेंट। सो आई विल राइट एन टपल 1 1, दिस विल प्रिंट मी 4। सो इफ यू लुक एट स्क्रीन, एन टपल 0 0 0 0 मींस 0 यहाँ ये है
और इसका भी स्ट्रिंग का भी 0th एलिमेंट s है, तो आई कैन प्रिंट दैट। अगर मैं n टपल 1 ब्रैकेट 0 करूंगी तो 1 ब्रैकेट 0 विल बी गिविंग मी 8 व्हिच यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन। आई थिंक आई एम एबल टू शो यू। s के नीचे आपको 8 दिखाई दे रहा है प्रिंट होते हुए। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंडेक्सिंग, सॉरी नेस्टेड इंडेक्सिंग। और ये आपने लिस्ट के अंदर भी देखी है, या आपने स्ट्रिंग्स के अंदर भी देखी है, एंड ये अब आपने टपल के अंदर भी विजुअलाइज कर लिया है। Now changing a tuple, which is very, very difficult, we cannot change it. Unlike list, tuples are immutable. That means one or the other element, even any of the element of the tuple cannot be changed once it has been assigned. जब आपने एक बार assign कर दिया है तो आप उसे change नहीं कर सकते. But if the element itself is a mutable type, like a list, अगर इसके अंदर list डली हुई है, let's say like list like this, and then within that list tuple के अंदर list डली हुई है, then it can be changed. तो आप टपल के अंदर टपल को चेंज नहीं कर सकते, बट टपल के अंदर अगर आप लिस्ट है तो आप उसको प्रॉब्लम चेंज कर सकते हो। प्लीज डू दीज एक्सरसाइजेस बेटा, ये रफ है एक तरीके से, आप ऐसे ही कोशिश करके एग्जांपल्स ट्राई करिएगा। लेट्स से दिस इज n tuple, this is the list, this is the tuple which is assumed. If I print this n tuple, I'll get the same exact output. Now, if I let's say n underscore tuple 1 1 1 1 means 1 is this and 1 is this. ये fourth ये वाला position पे डेटा को मैं 23 shift करना चाहती हूँ, तो I can write it's equal to 23 and print n tuple. So you will see Sikandar is as it is 8, 4 has been changed to 23, 6 6 like this, and 1 2 3. So tuple within a tuple cannot change, but a list within a tuple can change. Now, similar to list, again जैसे अपने लिस्ट में concatenation ऑपरेटर, रिपीट ऑपरेटर पढ़े थे या इन ऑपरेटर पढ़े थे, हम यही जल्दी जल्दी फ्लो करेंगे. We will use, I'll not give too much of explanation beta because we have already done the concept wise. It's just that it's a repetition in tuple. So just try to grasp the way of how to write here. Otherwise, everything is exactly same. So we can use plus operator to look up tuples. This is also called as concatenation. और अगर यही चीज मुझे बहुत बार रिपीट करनी होती है, if you want to repeat the elements of a tuple in a number of times, then I can do use asterisk operator. So both plus and asterisk operator results in a new tuple. तो tuple को अगर आप change कर रहे हो, मतलब basically tuple को आप repeat कर रहे हो, अब not से change कर रहे हो, tuple से आप नई tuple बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो obviously जो नया data type होगा वो tuple ही होगा. So if I have print 1 2 3 plus 4 5 6, both are in brackets, this proves that they are tuple, then you will get the answer as 1 2 3 and 4 5 6 like this. ठीक है. Repeat is a string, but it is a part of tuple because क्योंकि यहाँ पर comma दिया हुआ है and we have a round bracket like this. तो repeat को हम 3 times multiply अगर कर रहे हैं, 3 times repeat कर रहे हैं basically, तो this string will be repeated. repeat comma repeat, एक टपल बन जाएगा बेटा पूरा. दो अलग अलग टपल्स एक टपल बन जाएंगे, या बहुत सारे मल्टीपल टपल्स एक टपल बन जाएंगे. We cannot change the elements in a tuple. That also means that we cannot delete or remove elements of the tuple. हम एक आधे element को remove या delete नहीं कर सकते, हम पूरा tuple जरूर delete कर सकते हैं. But deleting a tuple entirely, पूरा tuple delete करना is possible using the keyword del. So let's say this is my tuple. ठीक है. I can, if I do try like this del, या मैं remove नाम का function try करने की कोशिश करूँ, which is not possible here. So del my tuple and third element, if I try to remove, it will give an error because it is not possible. It gives a error, type error like this. अगर मैं my tuple के आगे del लिख दूं, del my tuple, I can delete the whole tuple and the tuple would be deleted. Okay. And if I try to write now print my tuple, there is no my tuple as such because वो delete हो चुका, so it is not defined to give you an error like this. ना जैसे आपने लिस्ट पढ़ा, लिस्ट में ऑपरेटर्स पढ़ लिया, ऑपरेटर्स के बाद बहुत सारे मेथड्स पढ़ने गए थे. सिमिलरली आप पाइथन टपल्स के साथ भी मेथड्स पढ़ेंगे. मेथड्स मींस कौन कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हो. जैसे del वाज अ फंक्शन दैट यू वर यूजिंग. ठीक है. क्रिएट के लिए क्रिएट के लिए ऐसे आपने कोई फंक्शन यूज नहीं किया, but there are other methods like count, index, which you can use with your tuple exactly as you did it in your strings or your list. So what does count do? It returns the number of items that is equal to x. तो जो आपने x दिया है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है. ठीक है. Let's say if I write print total number of elements in p is my underscore tuple dot count, और मैं p लिख रही हूँ ब्रैकेट में. और प्लीज ये नॉमेनक्लेचर देखिएगा, ब्रैकेट लिखने हैं लाइक दिस. ठीक है. ये ब्रैकेट इसका है, यहाँ पर ब्रैकेट x के अंदर ब्रैकेट है. Now this p is repeating itself 2 times, so my count will come, my count of elements of p, element p is going to come out as 2. Index, what is the index function doing? Return the index of first item that is equal to x. तो अगर मैं x को यहाँ दे रही हूँ ब्रैकेट में, let's say l दिया है, तो ये पहली बार जब आया है,
तो दिस इज व्हाट यू डिड इन लिस्ट आल्सो. ये पहली बार जब आया उसका इंडेक्स देगा. यहाँ चांस की बात है एल इज कमिंग आउट वंस ओनली, इट विल गिव यू इंडेक्स एज 0 1 2 3. 3 वुड कम आउट. Had I given P in this question, so this would have said 0 1 1 निकल के बाहर आता. Now tuple membership test. We can test if an item exists in tuple or not. हम ये चेक कर सकते हैं कि tuple के अंदर वो एलिमेंट है कि नहीं है using in कीवर्ड. in कीवर्ड हमने लिस्ट में भी यूज किया था फॉर लूप लगाने के लिए, अगर आपको याद हो तो. My tuple is equal to this. Print a in my tuple whether a is present or, हम बेसिकली प्रेजेंस चेक कर रहे हैं, तो प्रेजेंस चेक करना will be giving me either true or. So print a in my tuple, it will give me true because a is present. Print b in my tuple, b is not present, will give false. Print g in my tuple, नॉट इन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है. नॉट जस्ट कि इन है लिखना है, नॉट इन. नॉट इन मीन्स उल्टा. तो जी इन माई टपल, यस जी इज नॉट देयर, तो ट्रू आएगा, ठीक है. So there is an in keyword also, there is a not in keyword also. Please make sure that you are writing not in properly like this. Iterating through tuple, this is what we did. in से हम iterate भी कर सकते हैं. मैंने अभी आपको बोला था लिस्ट में हमने in यूज किया था, for भी यूज किया था. तो यहाँ पर भी आप यही काम कर सकते हो. आप एक अपनी टपल लीजिए, आप उसमें एक वेरिएबल बनाइए फॉर नेम इन नेम्स. नेम्स इज दिस टपल. नेम इन नेम, तो नेम्स, तो नेम एक नाम का वेरिएबल है जो इसके एक एक एलिमेंट को अपने अंदर स्टोर करेगा वैल्यू. फॉर नेम इन नेम्स, तो नेम से एक एक एलिमेंट उठेगा, वो नेम के अंदर जाएगा. जैसे बेटा आपने पीछे देखा प्रिंट ए इन माई टपल, तो ए इन माई टपल मीन माई टपल का पहला एलिमेंट उठ के इसके अंदर जाएगा, मैच होगा. अगर ये ठीक है तो ट्रू आ जाएगा, और अगर ये ट्रू नहीं है नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा, थर्ड को चेक करेगा, फोर्थ को चेक करेगा, फोर्थ. तो बेसिकली माई टपल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, माई टपल के एलिमेंट्स मीन ए पी पी एल ई के जितने भी एलिमेंट्स हैं, they would be checked for, इनके अंदर है कि नहीं है, would be checked for with the corresponding element which you have written here. So say for example I have not written any element here, I am giving a random variable here, तो basically यहाँ से उठ के वो value उसके अंदर जाएगी. Something like this is going to happen for name in names. So names यानी सिकंदर की वैल्यू उठ के नेम के अंदर जाएगी. तो अब आपके नेम नाम के वेरिएबल में सिकंदर चला गया. So if I want to print that name, I can write here print name. यहाँ तो हेलो कॉमा नेम लिखा है, तो यहाँ पर लिखा आएगा हेलो कॉमा सिकंदर, ठीक है. हेलो सिकंदर, नॉट कॉमा वुड बी प्रिंटेड बिकॉज़ कॉमा इज नॉट पार्ट ऑफ कोड. हेलो सिकंदर वुड बी प्रिंटेड. देन अगला फिर लूप चलेगा. नेम्स इज अ पूरा टपल हियर, सो अगला एलिमेंट ऑफ टपल यानी शाहाट, शार्थ, ठीक है. शार्थ विल गो इनटू नेम, सो प्रिंट अगेन हेलो शार्थ. देन जॉन, प्रिंट हेलो जॉन, ठीक है. देन केट, देन आएगा हेलो केट. So this is the way you can use to iterate through. Iterate means एक एक एलिमेंट के अंदर जाना या उसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना is basically your iteration, which is very well easily done with the help of in variable, not variable, in keyword. So these are the other built-in functions of tuple. जैसे आपने बाकियों में functions पढ़े थे बहुत सारे, at least आपको 4-5 functions हर एक के आने चाहिए. Same kind of things are happening here also. Len, max, min, sorted, any, all, enumerate. You can read these functions on your own. I think this was all about tuples. I hope you are understanding list, tuples ये सब एक जैसे data types हैं. It's just that they have restrictions with respect to each other कि हम इसमें ये चीज कर सकते हैं, इसमें ये चीज नहीं कर सकते. Yes, First year, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो बेटा अब जब लैब होगी, लास्ट वीक एक्चुअली लैब नहीं हुई थी, आपकी थ्योरी क्लास हो गई थी. So this time I'm going to give you questions based on tuples also, some questions based on list, and चूंकि आज हम numpy शुरू कर रहे हैं तो majorly programs on the based of arrays. array का concept अपने आप में बहुत important है. There are a lot of programs that you can practice for arrays. तो arrays और list में कोई बहुत ज्यादा difference नहीं है. It's just that list में variety of data can be there. स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है. बट लिस्ट, बट arrays have a boundary. They have a foundation that they have one data type kind of element, whether it is integer, whether it is float. This is one type only. ठीक है. तो आज हम numpy शुरू करेंगे. numpy is basically another library available in Python which is specifically used for usage of arrays. So let me share the screen.
So now after tuples, I'm sharing the screen for NumPy. एंड व्हेन यू विल बी डूइंग numpy बेटा, जो लोग अपने सिस्टम पे लोड करके कर रहे हैं पाइथन आईडीई, तो उन्हें numpy को इंस्टॉल करना पड़ेगा. So and after installing that numpy, you have to import that numpy every time in your program. So we'll discuss that installing part in in practical class. If you people don't have numpy installed on your system. ऐसे ही scikit-learn, numpy, matplotlib, these are the libraries that we are going to now work on, and they are actually going to be used in your data science programming. जिन लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है पाइथन बेटा, have they gone through numpy, scikit-learn? Have they No, done? ma'am. नहीं. No, ma'am. Okay. No, ma'am. चलिए. So this is going to be a bit new for everyone. I hope you are able to see the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो. So we are going to talk about new toolkit, new library, that is NumPy. So Python, again, everybody now understands, a very simple and very easy language. जो चीज हम पहले बहुत मुश्किल से शायद कोड करते, इसके लिए आपके पास easily functions available हैं. So there are a lot of resources, hands-on libraries बहुत ज्यादा हैं आपके पास. So आप उन libraries को use करके अपने application पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं rather than working on the basic concepts. तो आप Python को बहुत ease out तरीके से use कर सकते हैं as a programming language in comparison to other programming language which have been worked upon in the previous years. So there is no built-in multi-dimensional array, but it supports the syntax for extracting elements from one. Multi-dimensional array के लिए कोई built-in function वो नहीं है, what should I say, library नहीं है. But then you can use this NumPy itself to work on multi-dimensional arrays also. So NumPy provides a fast built-in object ND array. एक ND array नाम का एक object बनाता है, which is a multi-dimensional array of a homogeneous data type. तो जो चीज पाइथन में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है मल्टी डायमेंशनल एरे, वो numpy के अंदर अवेलेबल है. तो अगर आपको वही काम करना है, then you have to install numpy into it. ठीक है. अगर आपको ये काम नहीं करना होता तो then numpy is not required. But then if you want to have multi dimensional array, array भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे. ठीक है. सो अगर आपको वो काम करना है तो यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल दिस टूल किट, numpy नाम की टूल किट, एंड देन यू कैन यूज दैट ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन दैट numpy टूल किट to further work on the arrays, multi-dimensional arrays, whether it is single dimensional or it is two-dimensional or three-dimensional. I hope this is clear. Let's move further. Just a second, beta. Okay. So now let's start again. A numpy is an array. बेटा आवाज आ रही है आपको? Is it audible? Yes, ma'am. Okay. A numpy array is an n-dimensional homogeneous collection of items. Now please make sure that you're trying to understand that it is a bit different from list, because list was one dimensional list. List में एक ही टाइप के एलिमेंट्स आ रहे थे, और नॉट एक टाइप के एलिमेंट्स, एक डायमेंशन के एलिमेंट्स आ रहे थे, एंड दे वर ऑफ डिफरेंट काइंड. दे वर भी नहीं बोलना चाहिए, दे कुड बी ऑफ डिफरेंट काइंड. But there is a restriction with respect to array that the items have to be of same kind. So this is something very important here. वो सारे homogeneous item होने चाहिए. Homogeneous means एक जैसे. So it should be a homogeneous collection of items of the same kind, and it is n dimensional. N dimensional means, so if you have heard of maths, आपने maths पढ़ा होगा बेटा. maths में शायद आपने matrices पढ़ी होंगी. तो matrices में एक रो होती है और एक कॉलम होता है. This is what is called as two dimensional data. ठीक है. अगर मैं आपको क्यूब की बात करूं तो क्यूब में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है. क्यूब, क्यूबॉइड या कोई भी शेप की बात की जाए तो तीन डायमेंशन दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है? एक एक्स, एक वाई, एक जेड. तो दीज आर एन डायमेंशनल डेटा. तो थ्री डायमेंशनल डेटा है. अगर आप मूवीज पे जाते हो तो सेवन डायमेंशनल, आपके पास 4D मूवी, 5D एंड 6D, ऐसी डायमेंशन होती है. So that's why when your dimensions are more, you cannot work with list as a data type. So you need to jump on to the area basically जहां पर n dimensional data को आप यूज कर सकें, आप उसके ऊपर फंक्शंस ऑपरेट कर सकें. ना n dimension में भी लिमिटेशन है. बेटा किसी का माइक ऑन है, ऑफ करिए बेटा.
n dimensional में लिमिटेशन ये है कि इट्स नॉट दैट यू वुड बी वर्किंग ऑन n dimensional, 4 dimensional, 5 dimensional और 6 dimensional डेटा. एट द मैक्स आप 2 dimensional या 3 dimensional पे वर्क करोगे. ठीक है. सो numpy as an array can provide you options for n dimensional homogeneous collection of data, but then you would be working at the max on 1 dimensional or 2 dimensional. ठीक है. The kind of the data can be an arbitrary structure and is specified using data type. आपको उसका बताना पड़ेगा कि वो जो डेटा है वो किस टाइप का है, but then it has to be of one single data type data. So there is always a header associated with it. अगर आप n dimension में मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको एक array बनाई. Array means elements are stored next to each other. आपके एक element है, फिर अगला element है, फिर अगला element है. The address of the elements is stored in header. So first header would be storing the address of first element. ठीक है. Now आप first element से second पे जाना, second से third पे जाना, third से last पे जाना, it's not that difficult because it is contiguous memory location. Contiguous memory location means एक के साथ attached memory location है. एक घर के बाद दूसरा घर है, दूसरे घर के बाद तीसरा घर है. तो अगर मेरे घर का एड्रेस है लाइक से 51, तो अगले घर का एड्रेस 52, अगले घर का एड्रेस 53 एंड सो ऑन. So if I know address, first address of my house, then पांचवे घर का address I can directly add up 5 and jump onto that particular location. That's the beauty of this array. और array में आपको header में आपके पास basically minimum first address होता है, first element का address होता है, next addresses can be popped up. Now what is numpy array? ये तो clear हो गया. आप कैसे use करना है, how to generate it, how to create it, that's the next step. A numpy array is a homogeneous collection of items, जिसे आप elements भी बोल सकते हैं, of same data type. सबका data type same होना चाहिए. या तो वो सारे strings होंगे, या वो सारे integers होंगे, या वो सारे float होंगे, and so on. Now how to generate a numpy array? Now in order to generate a numpy array, first and foremost thing that I told you, आपके पास numpy installed होने चाहिए. Installing के step में आपको class में practical में बता दूंगी. ठीक है. Now after you have installed your numpy on your system, आपको अपने प्रोग्राम में उसे कॉल करना है. तो कॉल करने के लिए देयर इज अ कीवर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज इंपोर्ट. ठीक है. तो यू विल राइट इंपोर्ट, यू विल राइट numpy एज, और आप उस ऑब्जेक्ट का नाम देंगे जिस ऑब्जेक्ट से उस numpy को कॉल कर रहे हो आप. तो मैं यहाँ np लिखा हुआ है बेटा. आप एज इज ऑल्सो कीवर्ड, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस. numpy ऑल्सो यू टू राइट इट लाइक दिस. यहाँ np में आप कुछ भी लिख सकते हो. आप a b c d x y z कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया. आपने एक एरे नंबर के ऑब्जेक्ट को कॉल किया है और उसको कॉपी कर दिया बेसिकली एनपी के अंदर. तो नाउ योर एनपी, अगर आप एनपी यूज करोगे तो यू विल राइट एनपी एवरीवेयर इन द प्रोग्राम. अगर आप यहाँ पर बेसिकली एक्स यूज करोगे तो यू विल यूज एक्स वेरिएबल, एक्स ऑब्जेक्ट थ्रू आउट योर प्रोग्राम. So it's basically giving a generation of a numpy array, and array has to be stored in a particular variable or an object, I should say. Now अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी एरे क्रिएट करनी है इस एनपी ऑब्जेक्ट से. तो ऑब्जेक्ट के साथ आपको क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन मिलता है बेटा. देयर इज अ फंक्शन एरे नाम का फंक्शन. ठीक है. अगर आपको याद हो, मैंने लिस्ट और ये सब जब आपको कराया था तो डू यू रिमेम्बर हमने किया था एन डॉट रिमूव, एन डॉट अपेंड, ऐसे करके फंक्शंस यूज किए थे. Similar kind of functions are available here, but then first function, दोबारा ध्यान से सुनिए, first function in order to generate an array, तो मैं a नाम की एक array generate कर रही हूँ. तो generate करने के लिए पहले मुझे object लिखना पड़ेगा, whether it is x, np or whatever. Then I have to put a dot, and then I have to call the function which will going method या function which is going to help me out in making an array, generating an array. ठीक है. अब np dot array एंड देन अब ब्रैकेट में एक रिक्वायरमेंट है कि जो आपको एलिमेंट्स उस एरे के अंदर स्टोर करने हैं, उन एरे एलिमेंट्स को आप लिस्ट के अंदर स्टोर करिए पहले और फिर यहाँ दीजिए. सो इफ यू वांट मी टू शो, बेटा मैं एक मिनट आपको शो कर देती हूँ. आई होप माई numpy is still there. Let me check out. I'm writing here import. I'm writing here numpy as, let's say np. मैंने np ही लिया है. Then what I'm doing, I'm trying to print generate an array with the name a. I have to write np
डॉट, मैं एरे फंक्शन को कॉल करूंगी। ये राउंड ब्रैकेट बेसिकली दिस आर द पार्ट ऑफ दैट एरे फंक्शन ना। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर बेटा आपको आर्ग्यूमेंट जो लिखनी है वो लिस्ट लिखनी है, 1, 2, 3 with the square bracket. Now if you see that list is a square bracket like this only, ठीक है। Now what I need to do is I need to print this array. So I'll write print array. I hope my Numpy is still here. Okay, it's still here. अब आप यहाँ देखिए बेटा, now this is an array of, now you cannot say this is a list कि आपको round bracket आया तो it is a list. So it is an array, it's a list of, array है लेकिन array के अंदर जो elements है वो list की form में है, but then all the elements are of one type. Plus this is of one dimension only. ठीक है, इसमें multi dimension अभी नहीं बनाया. So we can move further and make multi-dimensional arrays also because NumPy के अंदर वो ability है to create multiple dimensional arrays. I hope this is clear to everyone. At least just a difference between a difference of how to write an program, simple program to call NumPy and to make a single array and that too of only one dimensional, not many large dimensional. Yes, ma'am. Okay. Now we can do lot of programs, we can do lot of activities with these arrays. हम इस जैसे हम किसी लिस्ट के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, concatenate कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, हम उसके अंदर अपेंडिंग कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं या इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं. सेम काइंड ऑफ लॉट ऑफ एक्टिविटीज या थिंग्स कैन बी डन विद दीज एरेज आल्सो. अब वो एरेज में जो भी हम करना चाहते हैं उसके लिए इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल हैं. उन फंक्शंस को कैसे यूज करना चाहिए, लेट अस ट्राई वर्कआउट विद देम. Now let's say simple creation जो हम कर चुके हैं, import numpy is np, a is equal to array. Now it has written 0 1 to 3 means there are 4 elements in this array and I'm printing, if I'm printing it you will get something like this. Now checking the data type of each element of the array, basically वो array किस type की है, तो I can use type keyword. तो मैं यहाँ पे print type bracket a लिखूंगी तो यहाँ पर वो लिख कर देगा बेटा it is an array, it is a numpy array and it is an n dimensional array, nd array. ठीक है. Now if I want to type the elements किस टाइप के हैं, array a तो array है लेकिन array में elements जो हैं वो किस टाइप के हैं, वो string टाइप के हैं, float टाइप के हैं, character टाइप के हैं, क्या टाइप के हैं. So there is a function which is called as d type. So you need to write अपने array का नाम a, then you need to write a dot and then you need to write d type. Now if I जैसे ही मैं यहाँ पे a dot d type लिखती हूँ, print कराती हूँ screen पर, तो मुझे जो ये elements हैं, let's say 0 1 2 3 4, what are these elements? These are integer elements. तो यहाँ पर इंटीजर दिखाई देगा, इंटीजर ऑफ 64 बिट. दैट डिपेंड्स अपॉन योर कंपाइलर कि आपका 64 बिट का कंपाइलर है या 32 बिट का कंपाइलर है. ठीक है. अगर यही चीज Yes, बेटा ma'am. अगर यही चीज बेटा एरे की मैंने यहाँ पर लिखा होता है, लेट्स से 4 नाम लिखे होते हैं स्ट्रिंग्स की फॉर्म में, आई वुड हैव written सिकंदर, जोश और whatever I would have written the names as, then यहाँ पर मुझे इंटीजर नहीं निकल के आता, यहाँ पर स्ट्रिंग आउटपुट निकल के आता है because each and element of the array, each and every element of the array, d type means type of the elements, अंदर के elements किस टाइप के हैं, they would not be integer, then they would have been string type. यही चीज अगर मैं float लिखती बेटा यहाँ पर 1.5 2.5 3.5 3.4, then the output obviously would have turned out to be a float. ना हाउ मेनी बाइट्स पर एलिमेंट इज बीइंग यूज, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है पर एलिमेंट, ये भी अगर मुझे प्रिंट करना है तो देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल आइटम साइज. सो आइटम साइज इज अ फंक्शन व्हिच इज अवेलेबल हियर इन numpy. a dot item size if you write, तो आपका a dot item size would give you a number, that number is 4, let's say it's coming out 4. इस 4 का मतलब है एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए वो 4 बाइट्स ले रहा है. ठीक है बेटा. और ये भी आपके कंपाइलर डिपेंडेंट होता है. ठीक है. कुछ कंपाइलर्स जो होते हैं वो टू बिट का इंटीजर स्टोर करते हैं, 3 बिट का इंटीजर स्टोर करते हैं. ये अगर 4 बाइट्स का इंटीजर एक इंटीजर को स्टोर कर रहा है तो 4 लेगा. अब अगर यही चीज बेटा फ्लोट होता है वेरिएबल, यहाँ एरे के एलिमेंट्स फ्लोट होते हैं 1.5 2.5, फ्लोट को स्टोर करने के लिए ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है.
तो देन अगर मैं a डॉट आइटम साइज करती तो देन दिस वुड हैव नॉट कम अप एज 4, दिस वुड हैव प्रोबेबली कम एज 8। तो यूजुअली इंटीजर से फ्लोट की जो मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है वो डबल होती है। तो फ्लोट अगर आपका वेरिएबल हो, एलिमेंट्स होंगे, तो ऑब्वियसली आइटम साइज भी डिफरेंट होगा और रादर बड़ा होगा। नाउ नेक्स्ट इज शेप। I can find the shape of my array. It returns the shape returns the tuple listing the length of the array along with each dimension. आपकी डायमेंशन बताता है। तो लेट्स से एक शेप नाम का फंक्शन है अवेलेबल। ये सब फंक्शंस है बेटा, ये इनबिल्ट फंक्शन है। अगर आप एरे की लाइब्रेरी खोलोगे, यही फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, देन ओनली यू कैन वर्क विद एरे। तो दैट्स व्हाट आई सेड। पाइथन के साथ एडवांटेज ये है कि बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। All you need to know is how to use those functions and what are the name of those functions. So if I write here a dot shape, so I'll get 4 comma. 4 comma shows it's a tuple. ठीक है? If I can write it this way also, shape bracket a. So there are two options available. So you can write shape bracket a, यानी आपके array का नाम a ऐसे भी लिख सकते हो, और you can write a dot shape. So there's a kind of remembrance that you have to do कि कैसे करना है. At times you cannot be like यहाँ पर a dot d type है और आप d type bracket a करोगे, वो नहीं चलेगा. But then shape के साथ वो चल रहा है. So you just need to हल्का सा have a remembrance to this. Now उसके एलिमेंट्स आपके लिस्ट हैं, टपल हैं, वो आप निकाल सकते हो। बट देन व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे? साइज मींस कितने एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स हैं तो a डॉट साइज या साइज ब्रैकेट a, दिस इज व्हाट यू कैन राइट। तो अगर आपने कोई डेटा यूज किया है एंड यू वांट टू काउंट दी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दैट एरे, यू कैन यूज द साइज फंक्शन। बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज, अब कितनी बाइट्स? ऑब्वियसली एक एलिमेंट मान, एक एलिमेंट, हेलो हाँ बेटा कुछ बोल रहा है कोई? मैम आई हैव अ डाउट इन प्रीवियस स्लाइड। हाँ बोलो बेटा। मैम इसमें ए डॉट शेप जो है, इसमें 4 कॉमा के बाद कुछ नहीं लिखा, इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन है दैट इट रिटर्न्स द शेप। आपका टपल है ये, इस टाइप का है। दिस इज शोइंग इट्स अ टपल, फोर ब्रैकेट। ठीक है। यस मैम। साइज वुड आपका देगा कितने एलिमेंट्स हैं। दिस इज द साइज, दिस विल टेल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। आप अपनी अपनी एरे को चेंज करके आप करके देखोगे तो आपके साइज में डिफरेंट एलिमेंट या शेप में टपल लिस्ट क्या वो डिफरेंट निकल के आएगा। Then there is an option of finding how many bytes of memory the whole array is using. एक एलिमेंट आपका अगर 4 बाइट ले रहा है बेटा, और अगर मान लीजिए वहां पर 5 एलिमेंट में, तो इट हैज टू गिव द आंसर मल्टीप्लाइड 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, यहाँ आपका 12 आ रहा है तो प्रॉब्ली अगर सारे इंटीजर हैं, ऑल एलिमेंट आर यूजिंग 4 बाइट्स, तो 12 अगर आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज अज्यूमिंग दैट दी आपकी एरे की जो क्वांटिटी है या जो व्हाट शुड आई से एलिमेंट्स है, दे आर 3। तो 4 इंटू 3 12 आया। ठीक है, तो ये आप इस नंबर से मत जाइएगा अभी राइट नाउ। व्हेन यू विल बी डूइंग इट ऑन योर ओन, आप अपनी एरे चेंज करते जाइए और जस्ट एक बार ट्राई करके देखिए कि n बाइट्स अगर मैं डाल रही हूँ, 3 एरे एलिमेंट्स हैं, तो क्या आ रहा है। ठीक है, उस केस में आप ये भी करिए बेटा कि आप अपने एरे एलिमेंट्स को ही चेंज करिए। नंबर तो चेंज करिए कि कितने एरे एलिमेंट्स हैं, कभी 3 डालिए कभी 5 डालिए। साथ में आप ये भी चेंज करिए कि पहले आप सारे इंटीजर के एरे ले रहे हैं, फिर आप एक बार स्ट्रिंग के एरे लीजिए, फिर एक बार आप फ्लोट के एरे लीजिए। इस तरीके से भी करिए, यू विल सी दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ number of bytes that are being consumed by the array. Next is dimension. आपकी कितनी डायमेंशन की एरे? दैट्स व्हाट आई सेड। नंपाई जो है वो n डायमेंशन की एरे देता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन। वो बात अलग है कि हम अपनी रिस्ट्रिक्शन जो रखेंगे प्रोग्रामिंग की 1 या एट द मैक्स 2 डायमेंशन पे रखेंगे। वी माइट नॉट बी जंपिंग ऑन 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशन। ठीक है। So in order to find what is the dimension of the array that has been created, yeah, that the array that you are using, you can use a function which is called as ndim. ये नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, ndim। तो I write here like this a dot ndim, और यहाँ प्रिंट करवाओ अगर कराना चाहते हो तो आप प्रिंट यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली यू कैन राइट ndim a dot ndim like this. Now since it is a one dimensional array, it will print 1. ये अगर 2 डायमेंशनल एरे होती बेटा तो इट वुड हैव प्रिंटेड 2, जो मैं आपको आगे आने वाली स्क्रीन्स में दिखाऊंगी, हाउ टू यूज 2 डायमेंशनल एरे और हाउ टू डिफाइन अ 3 डायमेंशनल एरे। नाउ हाउ टू कॉपी एन एरे। एक एरे को दूसरी एरे में कॉपी करना है। आपने एक ए नाम की एरे बनाई थी विद द हेल्प ऑफ numpy टूलकिट, आपको बी को उसके अंदर एग्जैक्टली सेम रखना है, तो यू कैन यूज अ कॉपी फंक्शन हियर
you would write a dot copy bracket like this and store the content in b. So you will write b is equal to a dot copy, and now if you want to print b, ठीक है, आप अपना b को print करना चाहोगे तो you will see that the array is coming like this, array, this bracket 0 1 2 3 like this. कन्वर्जन टू अ लिस्ट, सो इफ आई वांट टू कन्वर्ट, अब मैं एरे को लिस्ट में और लिस्ट को एरे दोनों में कन्वर्ट करना है। जो अभी आपने फर्स्ट सबसे पहला तरीका देखा बेटा, यहाँ लिस्ट थी, इसने लिस्ट को आपको एरे में कन्वर्ट किया। तो दिस इज बेसिकली लिस्ट टू एरे, लिस्ट से आपने एरे बनाई। आप उल्टा भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप लिस्ट से एरे बनाने की वजह एरे से लिस्ट भी बना सकते हो वापस। देयर इज द ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन बैक टू लिस्ट. So that is up to you. If you require in your program that you generated an array and finally you want to create it back to a list, you can do that. Okay. So convert a NumPy array to a Python list. You can write a dot toList. toList is a particular tool, or I should say it's a function which converts your array to back to list. तो आपने अगर देखो तो प्रिंट होके आपके बाद में क्या आ रहा है ब्रैकेट में, 0 1 2 3 ना स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज इंडिकेटिंग कि आपकी लिस्ट जनरेट हो गई है। ठीक है, अब आप उस लिस्ट को फर्दर चेंज करना चाहो, क्योंकि वो म्यूटेबल है, उसके साथ कुछ और करना चाहो, देन ऑल दी फंक्शंस एप्लीकेबल ऑन लिस्ट वुड बी एप्लीकेबल ऑन दिस डेटा। ठीक है, लिस्ट के फंक्शंस एरे पे एप्लीकेबल नहीं होते, एरे के फंक्शंस लिस्ट पे एप्लीकेबल नहीं होते। तो अगर आपको एरे के डेटा पे लिस्ट के फंक्शंस का कुछ करना है, यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट, तो फर्स्ट प्रायोरिटी कन्वर्ट इट टू लिस्ट एंड देन डू सम एक्सरसाइज। For one dimensional array, list also works equivalently, क्योंकि one dimensional array और list ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ बेटा, वन डिमेंशनल एरे में आप ऐसे ही तो लिख रहे हो, वन डिमेंशनल यही आपके लिए लिस्ट है और यही आपके लिए एरे है। बट देन when your arrays are two dimensional, three dimensional, they don't work like a list, then they are arrays only. तो अगर आप सिर्फ 1D पे काम कर रहे हो तो चाहे आप उस डेटा को 1D एरे बना के काम करो या लिस्ट बना के काम करो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ओनली डिफरेंस वुड बी द फंक्शंस दैट यू आर गोइंग टू यूज वुड बी डिफरेंट, ऑल्सो यू विल नॉट बी यूजिंग numpy toolkit देन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक प्रोग्राम कराया था जिसमें आपने लिस्ट यूज करी थी, ब्रैकेट में फॉर लूप लगाया था। ठीक है, ए ई आई ओ यू आई थिंक वेरिएबल्स यूज किए थे आपने टू फाइंड दी वॉवल्स, दैट इज लिस्ट। तो आपने फॉर फंक्शन यूज करने के बाद आपने वो काम किया था। मैं यही चीज एरे से भी कर सकती थी। एरे में भी आई कुड हैव रिटन ए ई आई ओ यू और एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके आई वुड हैव चेक वेदर माय स्ट्रिंग इज हैविंग वॉवल्स और नॉट, और डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। तो वन डायमेंशनल एरे और लिस्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं, बट obviously there's a difference in workout and there's a difference in speed as well, but is slower, array slower होती है, list a bit fast होता है। ठीक है, for 1D array list also works equivalently but is slower. Now it's up to you, आप वही काम list से करना चाहते हो या वही काम array करना। लेकिन if the question specifically say generate an array of this data and things, देन वो आप काम लिस्ट से नहीं करेंगे, आप स्पेसिफिकली numpy array के साथ ही करेंगे। ना अगेन जैसी इंडेक्सिंग आपने स्ट्रिंग्स में, लिस्ट में, टपल में देखी थी, वैसी ही इंडेक्सिंग यहाँ पर भी है। अगेन आई कैन एक्सेस, अब ये भी वन डायमेंशनल के लिए ही बोल रही हूँ बेटा, वी आर नॉट शिफ्टिंग टू टू डायमेंशनल, क्योंकि टू डायमेंशनल में इंडेक्सिंग पे ध्यान देना होगा। Now, one dimensional के लिए index is obviously positive, negative indexing both work here. You can write here A0, A1, A2 and access the elements. Now, the best part about array and in comparison to list is that मैं array element को access भी कर सकती हूँ और मैं array elements को change भी कर सकती हूँ. So, if I want to change the first element of the array, I can write here like this, A0 is equal to 10. That means 0th element को मैं value 10 दे रही हूँ. So, I'm changing the list. So this is the way the array can be changed also and indexed also. Is it clear, beta? Yes, Yes, ma'am. ma'am. I know you would be finding it a bit difficult क्योंकि अभी आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो इतने फंक्शंस को कि याद नहीं होंगे कि कैसे लिखना है। बट धीरे धीरे व्हेन यू डू फ्यू प्रोग्राम्स आप लैब में करोगे बेटा तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो ऑल यू नीड टू जस्ट रिमेम्बर इज ये फंक्शंस आपको लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना है कि हाँ मुझे ए डॉट ऐसे ही लिखना है। ए मीन्स वट एवर एरे योर नेम इज। मान लीजिए मेरी एरे का नाम पी है तो आई वुड राइट पी डॉट समथिंग, बट वॉट इज द फंक्शन, हाउ डू यू राइट इट, प्लीज जस्ट डू अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। ना सेट लेट्स से मेरे को एक एरे जो जनरेट करी है मैंने, उसके सारे एलिमेंट्स को मुझे जीरो से चेंज करना है। आई डोंट वांट 10 0, तो देयर इज अ इनबिल्ट फंक्शन व्हिच इज अवेलेबल, फिल।
So if I write A, which is the name of your array, dot fill bracket 0. So it will fill all the elements with 0. ठीक है? So fill function sets all the value in an array of a particular value. This also works but maybe slower. तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से a colon slicing दिखा दिया आपने slicing दिखाई आपने ना start बताया ना end बताया तो that means the whole array is to be assumed here. Now whole array is equal to 1 कर दिया तो that means all the array elements are 1. तो आप ये इस तरीके से करना चाहो या इस तरीके से करना चाहो whichever suits you well, which you remember, you can do it through that way. Okay, so this was again fill with the same behavior a dot fill minus 4.8. Now if it is minus 4.8 you're writing here, but your array is integer, ठीक है? So it cannot be float like this. आप यहाँ पर float elements नहीं fill करने को कह सकते अगर आपकी integer element है तो आप यहाँ पर देखिएगा -4 आ जाएगा, ठीक है? It won't incorporate that -8. So assigning a float into an integer array will be automatically truncating the digital decimal part. तो अगर आप कोशिश करोगे जैसे a0 इज इक्वल टू 10 की बजाय आपने a0 इज इक्वल टू 10.6 लिखा, ऑटोमेटिकली वो उसका इंटीजर पार्ट रखेगा, बाकी डेसिमल पार्ट ट्रंकेट कर देगा एंड इट डू इट ऑन इटसेल्फ, क्योंकि आपने ऑलरेडी एरे जो बनाई है वो numpy की एरे बनाई है, इंटीजर एरे बनाई है, ठीक है? ओके, आई थिंक बेटा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे. डोंट बॉदर अबाउट मल्टी डायमेंशनल एरे, but try to remember all these functions and try to create this array and do small छोटे छोटे programs with respect to कि type function चला के देखा, d type चला के देखा, shape चला के देखा. Tomorrow in next lab मैं आपको programs की एक list दूंगी. Let's say I'll ask write a program to store elements in an array and find the largest of that array. Now largest of that array find करने के लिए आप functions भी use कर सकते हो, without function आप अपना लॉजिक लगा के भी कर सकते हो. तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे करना है, बट चूंकि मैंने क्वेश्चन में एरे लिखा होगा so this process has to be done, that array has to be assumed and that array element has to be further processed to find out maximum minimum या specifically element search करना है तो वो भी करने का ऑप्शन है, ठीक है? So you will do programs of one dimensional array, not multi-dimensional, because we have not even discussed multi-dimensional array, which we will do in other classes. Probably हम multi-dimensional पहले ना भी करके हम slicing यानी single dimensional पे काम करेंगे. So when you work on single dimensional, you have just one bracket like this. But when you have multi-dimensional, you have multiple brackets like this. So you will find a difference of working with one dimension and multi-dimensional. So next class में बेटा हम ये सब शुरू करेंगे and this is all about for today's class. Ma'am, installation. Ma'am, it's notes. हाँ बेटा बोलो. Ma'am, would you share these notes? Do you want numpy? I'll send this. मैं ग्रुप पे भी सेंड कर देती हूँ, ठीक है? I'll send this ppt.